सो दिव्यांश, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट राइट, कि हम जब लोगों से बात करते हैं अबाउट ट्रेडिंग कि कितने लोगों को ट्रेड्स का रीजन एग्जैक्टली याद होता है, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, या बस ट्विटर ने बोला इसलिए। Right. So I feel most retail traders in India quit actively trading within their first year, not because markets are impossible, but because लोग trading tips पे, vibes पे, Twitter, Telegram देखकर कर रहे होते हैं, एक्चुअल डेटा पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा होता है। एग्जैक्टली एंड इसी रीजन की वजह से आज हम ब्रेक करेंगे कि व्हाई सो मेनी ट्रेडर्स बर्न आउट एंड अ स्टेप बाय स्टेप वे टू फ्लिप दैट स्क्रिप्ट विद सिंपल हैबिट्स यू कैन स्टार्ट दिस वीक। Right. And the bonus is we'll share the exact journaling framework we use to spot our blind spots without turning this into a sales pitch. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। ग्रैब योर चाय नाउ। सो वेलकम टू चाय चाट एंड कैंडल फ्रेंड्स। आई एम क्षितिज। And I'm Divyansh. We are both traders who have had our fair share of red days, FOMO entries, and भाई ये क्या exit कर दिया, right क्षितिज? राइट, एंड इस शो का गोल सिंपल है, नो नॉनसेंस मार्केट टॉक, रियल स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल हैबिट्स दैट हेल्प यू मेक अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। Today, the most common reason traders quit is FOMO and overtrading. There are no plans and records. There are a lot of emotional leaks, and we'll give you a 30-minute review routine how you can fix this, राइट, right? एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, राइट। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट्स आर इवेंट हेवी, बीट बजट डे, आरबीआई पॉलिसी हो या मॉनसून सीजन हो, इलेक्शन चैटर हो या आईपीओ वेव, सो आई मीन इट्स टू मच वोलेटिलिटी, राइट। बट एक्चुअली वोलेटिलिटी इज गुड एज अ ट्रेडर, राइट, एंड वोलेटिलिटी इज श्योर एन अपॉर्चुनिटी, बट इट श्योरली इज अ ट्रैप एज वेल। राइट। सो टिपिकल पैटर्न पीपल सी कि मार्केट अच्छा चल रहा है, दे एंटर अ ट्रेड, गेट स्टॉप आउट, री एंटर, ट्राई टू रिकवर विथ रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, एंड एंड अप लूजिंग देयर कैपिटल एज वेल एज कॉन्फिडेंस। और ये सारे ट्रेडर्स के ऑलमोस्ट अर्ली डेज में होता है। राइट, एंड नॉट टू मेंशन राइट कि बैंक निफ्टी इज वैसा वाला फ्रेंड जिसको डिनर पे काम रहना नहीं आता, पहले मस्त बिहेव करेगा एंड फिर एकदम से सरप्राइज। राइट। एंड एसेंशियली मोस्ट ट्रेडर्स के साथ ये तीन कोर प्रॉब्लम्स होती है कि देयर इज नो डिफाइंड सेटअप, एवरी कैंडल लुक्स लाइक अ सिग्नल टू यू, राइट? यू randomly enter at every candle, right? Then there's no trade records. You have a biased memory ki I am either winning or losing. You do not know ki how you've been doing for the past couple of months. And there's no review system. You keep on repeating the same mistake over and over and over again. सो इट्स बेसिकली लाइक कि यू जस्ट हैव टू इमेजिन रनिंग अ किराना स्टोर without knowing margins or inventory, and trading without records, I feel, is exactly like that, right? Exactly right. So let's start with opening some charts, not to give you any calls, but to give you a idea of how what the market is doing these days, what the structure looks, give you a little theme of what's going on, and how to have self-control while trading. Right, that would be very helpful. One. All right, so let's have a quick look at the major indices. निफ्टी में हम देख सकते हैं क्लियरली कि काफ़ी दिन से निफ्टी was मूविंग डाउन इन अ बेयरिश स्ट्रक्चर, लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था निफ्टी, यू कैन क्लियरली सी, बट ओनली रिसेंटली इट ब्रोक द स्ट्रक्चर। इफ यू लुक एट 1 आवर टाइम फ्रेम यू कैन सी कि ये लोअर हाइज लोअर लोज बनाते बनाते इट हैज नाउ क्रिएटेड अ न्यू recent हाई, right? Nifty obviously could fill this gap and then try to move up, but we'll have to see whether it is trying to create higher highs and higher lows. But recently, it looks like it might become bullish again, clearly, technically speaking, right? But you have to look out for 25,000 wala level. It's a very important psychological level for the past few weeks. You can see यहाँ पर भी there were a lot of struggle for Nifty to move up, then eventually it moved down, and then again it's hovering around this level. So watch out for this level. Also look at other indices as well. How are they supporting Nifty? Whether they are not moving in sync with Nifty. Like Bank Nifty, if we see, it is a relatively weaker sector as of now, so you have to be careful with Nifty because Bank Nifty had a lot of weightage in Nifty and it might actually pull Nifty down with it, right?
So it also has broken structure, but you see there was a sharp sell-off last Friday, and it has failed to sustain the structure. So just watch out for whether the move is being sustained in Nifty or not. If it does and it starts creating higher highs and higher lows, then it's a good time to look at bullish trades, I would believe, right? But you have to be very careful for the next couple of days. Okay. After looking at Nifty, one thing I remembered is that in my own trading, when I look back at my journal entries, I react very differently when it's a trending market, either bullish or bearish, and when it's a choppy market, right? मेरी personal data से I found out कि I do very bad when it's a choppy market, especially sideways kind of thing when there's a lot of stickiness. And I only got to know this because I was tracking my trading habits, right? So because of my journal, I figured out that I do bad in choppy markets. So that's why we are building Astra with a journaling backbone. So insights aren't Mhm. just market wide, they are personal. And your journal will help you do that. Yeah, that would be quite helpful actually. Right. So let's go back to the leaks we were discussing earlier. So Okay. the leak number one is FOMO and overtrading. I guess everybody knows what FOMO and overtrading is. And the best indicator isn't RSI, it's actually your heart rate. प्राइस स्पाइक्स को चेज करना, उसके बाद पोजीशन को बेबी सेट करना कि भाई इट ओज मी अ रेंट, इट विल मूव इन माय फेवर, राइट? दैट्स अ वेरी Right. टॉक्सिक ट्रेट ऑफ अ ट्रेडर. And actually, not to mention, I used to suffer from that until I defined a setup for myself. And actually, it's simple. And how to plug it? Just write down what are your A plus setups and a daily trade cap. Let's say, for example, max 3 trades per day, and add one trade only if your risk to reward ratio is greater than 1.5, right? And the reason matches the plan. Also, which takes us to our league two, where we discuss about no plan and no risk rules, right? So people basically spend 30 minutes searching for the best indicator and literally 0 minutes trying defining invalidations. और ये एक मेजर चीज है राइट जो आई फील इम्प्रूव करनी चाहिए. Exactly. So just like Kshitij mentioned a minute ago, you should have a valid rule, right? You should have a system. जैसे कि how could you fix this problem? You know, plans वाला है. You should have a setup. You are trading breakout, reversal, indicators, whatever. You should have a trigger, entry model. कि जब setup आता है तो how do I enter a trade, right? You have a invalidation in case what if, right? अगर ये होता है तो is my trail trade still valid या किसी वजह से पैटर्न नेगेट हो रहा है. You should have a risk per trade, right? And you should have Correct. definitely have a max daily loss of 2-3%. Do not blow up 10-20% cap of your capital trading options maybe. So now that brings us to league number three, that is no records. Without logs, your brain highlights wins and hides the dumb stuff. You feel very pumped up when you take a winning trade. You forget ki I've been losing thousands and thousands of rupees for the past few weeks. You feel like you have started to win. So there's a recency bias. If you do not keep a log, you'll never be able to figure that out. करेक्ट राइट इसलिए मैं खुद एक टेम्पलेट यूज करता था राइट एंड इसलिए गाइज वी हैव फॉर यू अ बेसिक टेम्पलेट दैट यू कैन जस्ट फॉलो राइट बेसिकली स्टार्ट विद 6 columns. One is date, instrument, direction, entry, exit. Why is basically the most important part. Why have you chosen this setup, right? And इससे भी ज्यादा important है emotion. What were your emotions prior to the trade, during the trade, and after closing the trade, right? I feel you should track these things. Correct. You can eventually add up whatever column you like. Maybe you can add risk कितना लिया, कितने डॉलर्स का और कितने रुपीस का, राइट? तुम्हारा रिवॉर्ड मल्टीपल कितना था. You can actually, I do this. I post screenshots or I keep a log of the links कि क्या ट्रेड Right. हुआ था. It kinds of reminds you of the pattern that you are doing right or wrong, right? It's like Right. chess. You keep looking at that pattern again and again and again, and then it fits into your brain, then you can start doing things right. राइट सो गाइज हम दोनों अब एक सिस्टम यूज करते हैं राइट जो ये सब Right. ऑटो ऑर्गेनाइज करके पैटर्न्स दिखा देता है. जैसे फॉर एग्जांपल वीकडेज पे बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डे दैट सूट्स मी, सेटअप वाइज स्टैट्स. बट इवन विदाउट टूल्स राइट the habit itself is a game changer. You should do journaling like just to keep track of your trades and which in general helps you improve a lot. Right. So reminds me of a personal story.
Mm-hmm. In 2021 IPO season, the IPO frenzy was crazy, right? Right. Twitter पे you see a lot of people posting, brokers notification send करते थे. Every Right. single IPO was going oversubscribed. I bought a breakout. Mm-hmm. I did not get the IPO allotment. I bought a breakout that didn't fit my Mm-hmm. plan only because I Okay. saw it on Twitter. I saw people talking about it, news, media everywhere, and the result, very late Mm-hmm. exit and a loss of 12,000 rupees in 48 hours. Damn. Back then, it was almost like 20% of my capital. Damn, that's bad to hear, but glad you started using the journaling framework and now you are back on track. Even for me, Right. like journal review showed me like best trade came on Mondays, worst on Wednesdays. And when I tried to make the day green, right, for Wednesday example, जो मेरा worst day था, एक simple rule बना दिया, right? No trading on Wednesday unless I get an A plus setup. Correct. राइट सो आई हैड अ वेरी सिमिलर पैटर्न. मेरा मंडे Okay. स्क्रीन होता था जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता था. ट्यूसडे को आई ओवर ट्रेडेड. आई कुड नॉट टेक कि भाई मंडे अच्छा गया था, ट्यूसडे बेकार जाएगा, आई लूज ऑल माय मनी दैट आई मेड ऑन मंडे. फिर जब मैं जर्नल को देखने लगा, इट्स वॉज वेरी ऑब्वियस कि पोस्ट विन एग्रेशन होता है. इट वॉज नथिंग Mm-hmm. टू डू विथ एनालिसिस. इट वॉज लाइक कि भाई आई कैन नॉट लूज इफ आई वन ऑन द प्रीवियस डे. Right. So basically, data turns feelings into facts, right? That's what we have concluded, right? And that's the राइट. point of journaling. Basically, you learn yourself, not just the market, right? And just to show this to you, right? After psychology and case studies, right? We will show you like the same process that applies in Nifty and Bank Nifty also applies to commodities. Process same hai, lens same hai. It's just that you have to keep a track of all the things you do, right? करेक्ट. So let me just start by sharing my screen because Indian traders obviously stocks और indices के साथ साथ commodities को भी देखते हैं. So let's एग्जैक्टली. start. So let's start with gold, right? So gold, as we all know, is a safe haven asset और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है और करंटली तो जो ट्रम्प अगर एक ट्वीट डाल देता है तो गोल्ड बिकेम्स एन एसेट क्लास जहाँ पे सब इन्वेस्टर्स रन थ्रू करते हैं, राइट? So currently gold is trading in a very tight range, right? You can see multiple times it has tested this trend line for falling trend line as well as this rising trend line, right? So basically हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है and यहाँ से सपोर्ट लेता है. So it's currently trading in a very tight range. So you should keep track of this range, I feel. Sometimes a pullback from here could get you to the resistance and vice versa, right? Which brings me to the next commodity, which is silver. तो जैसा कि सिल्वर को जानते हैं, गोल्ड को जैसे जियोपॉलिटिकल प्रीमियम मिलता है, सिमिलरली सिल्वर को मिलता है इंडस्ट्रियल प्रीमियम, राइट? बेसिकली अगर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे, चाइना में स्मेल्टर्स का बहुत सीन चल रहा है, बेसिकली स्मेल्टर्स का शॉर्टेज एंड ऑल. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देर इज इज सप्लाई एंड डिमांड वाला इशू, राइट? यूरोप में डिमांड हाई बट चाइना उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो काफी टाइम बाद, बेसिकली काफी टाइम बाद एक मेजर ब्रेकआउट दिया है सिल्वर ने. इट वॉज ट्रेडिंग इन दिस रेंज फॉर लाइक एन ईयर और टू एंड उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया and then again after rising a bit it has given a pullback, but I feel this is a healthy pullback, right? Because it obviously has a healthy correction because of this ongoing scenario, and this pullback basically could be considered as a support opportunity, right? एंड इस राइट. ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, दिस वाज अ मेजर सपोर्ट, राइट? दिस वाज अ मेजर सपोर्ट काफी टाइम से. सो इसके ऊपर एक ब्रेकडाउन कुड गिव अस मेजर रेंज. Okay, which brings me to the next commodity, which is natural gas. Now natural gas and crude oil, right? These two commodities are the most volatile commodities in the market. Okay, like literally दिन दिन में जैसे कि आप देख सकते हैं has given a 5% down move, right? So it has been trading in a bearish range काफी टाइम से और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का हर बार ट्राई करता है एंड देन वहां से सपोर्ट ले लेता है. Okay, so if you guys want, you can just copy this trend line and just for reference draw it on your charts as well. Okay, so जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कर ट्रेंड कर रहा है, आई फील इट्स ट्रेडिंग इन अ बेयरिश रेंज. अनदर रीजन इसकी नेचुरल गैस के जो इन्वेंट्री का डेटा आया था, ओके, इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड. काफी ज्यादा स्टोरेज बिल्डअप हो गया है, उसके वजह से सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है. एंड क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2022, राइट, इट्स it's trading in a really tight range, you know. It's kind of trading in a symmetrical pattern range. So unless there is a breakout or breakdown on either of the side, you cannot really predict what happens. Obviously, you can plan short trades by trading supports and resistances,
but yeah, it would be a bit risky as these two asset classes are quite volatile. एंड बेस मेटल्स का चेक कर सकते हैं. सो जैसे जैसे मैंने बोला था कि यूरोप में डिमांड बढ़ रही है एंड चाइना में स्मेल्टर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके वजह से आफ्टर गिविंग क्वाइट a significant bearish trend, right? It has finally broken through this trend cleansing and it is quite comfortably sustaining the up move, right? So I feel ki this could be a good bounce back opportunity for those of who are planning to trade base metals. Yeah. So that was the technical outlook of most of the commodities. Commodities behave very differently from indices, right? कि higher volatility होती है, overnight gaps and global news. And I used to get easily shaken down by these moves, right? Because मेरे पास enough past data ही नहीं था. I didn't know how to react and कैसे करे क्या Right. करे. And that's where journaling helped me. You know, I used to always reduce my size to position size to faster after just one bad trade. And once I saw that pattern, I could literally manage better. Now, while comparing gold and equity returns, right? If you don't know how your trades behave in different instruments, you might just assume कि commodities बहुत risky है. But journaling actually shows you कि this is just a bias and not a reality, right? This is what I've realized personally, and also I've realized कि I manage commodities better than I thought, and that's where Astra tries to do, right? Highlights not just market behavior, but your behavior inside the market as well. Right. राइट एंड सो बेसिकली गाइस कुछ नहीं करना है हर वीकेंड, राइट? बस 30 मिनट्स दो अपने आप को और बस इतना करो, राइट? जस्ट फॉलो दिस चेकलिस्ट विच आई एम अबाउट टू गिव यू एंड यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ फॉर द गुड. ओके. सो द फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग विंस एंड लॉसेस को ट्रैक करो फॉर 10 मिनट्स एवरी वीकेंड. ईच ट्रेड रीस्टेट द ओरिजिनल रीजन कि तुमने ट्रेड क्यों लिया था. डिड यू फॉलो इट और नॉट, डिड यू फॉलो योर सेटअप रूल्स और नॉट, एंड जस्ट मार्क इट एज यस एंड नो. ठीक है. उसके बाद फिर पैटर्न्स को टैग करो अपने ट्रेड के कि कौन सा सेटअप फॉलो किया था, सेशंस के बीच में तुम्हारा मूड कैसा था, ओपन मिड क्लोज, एंड देन डे ऑफ द वीक, कौन से डे ऑफ द वीक को ट्रैक किया था, हाउ वाज योर इमोशन, वेदर यू वर काम एंशियस और एक्साइटेड थ्रू आउट द ट्रेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आउटकम, जो आउटकम आएगा उसके बाद तुम्हारा मूड कैसा था. दिस विल हेल्प यू गाइज अ लॉट, राइट? एंड विच ब्रिंग्स मी टू द थ्री इनसाइट दैट आई फॉलोड, राइट? So basically, I overtraded after first win. Breakouts work based on which days, which volume days. ये सब मैं ट्रैक करता था. ओके. बेसिकली वन रूल अपडेट, कन्वर्ट वन इंसाइट इनटू अ रूल फॉर द नेक्स्ट वीक. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हें इंसाइट मिले, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैक्स टू टू ट्रेड्स आफ्टर फर्स्ट विन, ऐसा कोई इंसाइट इंसाइट मिले ना, सो मेक इट अ रूल एंड फॉलो फॉर द नेक्स्ट वीक, राइट? And after all, reset is the most important part. Clear all charts, set alerts, prep watch list, and you're good to go for the next week. Right. So all of this might sound a little overwhelming कि ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, and that is where अस्त्रा comes in. हमारा जो सिस्टम है इस प्रोसेस को इजी बना देता है. You have tags, statistics, automated insights. लेकिन honestly, you can also do it on paper. You can maintain a spreadsheet yourself. But if you do it via system, try to take something from it. Try to learn from it. That will basically help you. So essentially, journal your trades and do a post analysis of your trades to get an idea ki how you are doing, develop some habits out of it. It will help, right? Right. राइट. एंड आपका इनर वॉइस भी रिकॉर्ड करो, लाइक एक लाइन, जस्ट फॉर एग्जांपल वन लाइन, कैसा फील हो रहा है, राइट? एंड यू विल बी शॉक्ड हाउ इमोशंस प्रेडिक्ट आउटकम्स, राइट? बेसिकली हम लोग एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो करके एक मॉडर्न ट्रेडिंग जर्नल असिस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि आपको पैटर्न दिखाता है, राइट? डिसिप्लिन बिल्ड Right. करता है एंड इट एक्ट्स एज योर असिस्टेंट. और पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन इतना इजी बना देता है कि यू डोंट इवन हैव टू ट्रैक योर ट्रेड्स मैन्युअली, और ये सब मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है. देयर इज नो बायस एट ऑल. Exactly, like Hitesh said, कि it makes it very easy for you guys, right? And if you want to be part of our inner circle, जो early users हैं Astra के, who will help us shape the product, Astra will help them shape their trading habits. Comment inner circle down in the comment box, and you'll get an early access to the product, review templates, and we'll learn from your feedback. You'll learn from our product's feedback, right? Right. So basically, this is no pricing or pitch, right? This is just a basically way to help you use to good habits, और बस आपकी good habits चालू करने के लिए this is a initiative. Okay. Right. So we are not selling you any course or anything. We are not promising that you will turn profitable from this day, you'll recover all your losses. But just like any other degree that you pursue out there in the world, you have to follow a process, you have to reflect, and you have to see कि आप
क्या कर रहे हैं, कैसे improve कर सकते हैं. That's where this product or journaling helps in, right? So you must journal your trades, every single trade that you take. And in the next week, will cover the most dangerous mindset in Indian trading right now and how to replace it with rules that actually survive volatility. You do not blow up your account or your confidence. राइट, हम कुछ प्रॉमिस करें ना ना करें, एक चीज आपको जरूर प्रॉमिस करते हैं कि विल हेल्प यू डेवलप अ गुड हैबिट फॉर श्योर. नाउ इफ यू डू डिड एंजॉय दिस, लाइक शेयर if this helped and drop your biggest trading lead below. We'll pick 3 comments and turn them into mini case studies for our next episode, and probably we'll get a chance to feature on the Astra page as well. Thank you guys. Right. Thank you guys. Have a good trading week ahead.